गुरु हे सद्गुरु आनन्दाश्रम शिष्याग्रं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम् सारस्वतजनप्रीतः सारस्वतसमर्चकः य आसीत् तं मुदा वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, श्री मात्रे नमः। परम पूज्य गुरुवर्यांक कोटि कोटि प्रणाम आणि सगळ्यांक नमस्कार. On behalf of all the organizers of the Gharana online music series, I, Bhavani Nair, and I, Amita Shirur, welcome you all to the first of the two special concerts to honor the memory of our dearly loved Hosangdi Vasant Ma'am, whose 87th birth anniversary falls on the 10th of August. Today, to celebrate this momentous occasion, we have with us Dr. Aparna Mayekar, daughter of Shri Dattaji Davzekar, one of the most renowned music composers of the Marathi film industry, who played a significant role in Vasant Ma'am's musical career. Dr. Mayekar is herself a veteran playback singer for Marathi films and has several hits credited to her. A very warm welcome to you, Dr. Aparna ji. एक कुटुंबाच आधारस्तंभ म्हळ्यारी आवस बापूसू आणि आमगेल घर आना कुटुंबाच आवस बापूस म्हळ्यारी नीलेश्वर महेश माम आणि होसंगडी वसंत माम. घर आना is the baby of Mahesh Mam, for it was he who created and conceptualized the program. And to call Vasant Mam the father of Gharana wouldn't be an understatement. What started as a series of simple online concerts to bring music and other performing arts into our homes during the pandemic reached a totally different level with the wholehearted involvement of Vasant Mam. Vasant Mama ne घर घर आणतावनु, गांव गांव आणतावनु आणि देश विदेश आणतावनु म्युझिशियन्स, डान्सर्स आणि दुसरे आर्टिस्टांक सोदून कान मात्र नाही, कितकी जणांक उत्तेजन दिवनु तांक परफॉर्म सुद्दाय करू लायल्या. आता प्रति शेनवारा घरानाचे प्रोग्राम सुरू झाल्या म्हूण आमकां कशें कळटा? टायटल म्युझिक आयकून नवा. The credit of this title music also goes to our dear Vasant Mam. Vasant Mam was born on 10th August 1934 in Kasaragod, Kerala, to Hosangdi Bhaskar Mam and Saguna Pachi. However, he studied in Poddar High School and later passed out from Ruparel College, both in Mumbai. Vasant Mamagal Jeevan Katha अगदी रोमांचक असं म्हणयेद आणि तागल ही यात्रा आम्ही सांगाती करूया जाल्यारी ताज पहिल्या आम्ही आयचे कार्यक्रमाचो शुभारंभ एक गुरुवंदनान करता असती. प्रस्तुत करता अस उद्यावर विनती पाची. सारूप्या
सालोक्य घडता सायुज्य प्रदान सदा स्मर गुरुना सदा स्मर गुरुना गुरु करता गुरु कारक गुरु करता गुरु कारक साध्य गुरु गुरु साधक साध्य गुरु गुरु साधक गुरुची फल गुरु फलदायक गुरुची फल गुरु फलदायक गुरु कृपेने ज्ञान सदा स्मर गुरुना सदा स्मर गुरुना गुरु ही पूजा गुरु पूजक गुरु ही पूजा गुरु पूजक इष्ट गुरुची गुरु प्रभु रूपक इष्ट गुरुची गुरु प्रभु रूपक सर्वव्यापी गुरु विद्यमान सर्वव्यापी गुरु विद्यमान गुरु कृपेने ज्ञान सदा स्मर गुरुना सदा स्मर गुरुना गुरुधारणा गुरुधारक गुरुधारणा गुरुधारक शक्ती गुरुची गुरु शामक शक्ती गुरुची गुरु शामक गुरुची नर गुरु नरनायक गुरुची नर गुरु नरनायक गुरु विणना कल्याण सदा स्मर गुरुना सदा स्मर गुरुना गुरु ध्यान सारूप्य गुरु ध्यान सारूप्य गुरु पद कमल सामीप्य गुरु पद कमल सामीप्य गुरुधाम सालोक्य घडता सायुज्य प्रदान सदा स्मर गुरुना सदा स्मर गुरुना सदा
दाता गुरु कारक साध्य गुरु गुरु साधक गुरुची फल गुरु फलदायक गुरु कृपेने ज्ञान सदा स्मर गुरुनाम सदा स्मर गुरुनाम सदा स्मर Vah Vinati Pachi, that was a divine Guru Vandana and a beautiful beginning to today's program. Thank you so much. Since childhood itself, Vasant Mam was interested in music and took keen interest in any activity connected to it. At a very young age, Vasant Mam would attend music concerts at the Suburban Music Circle, Mumbai. Here, he had the opportunity to listen to top-notch artists at close quarters, which helped him to grasp subtle nuances of Indian classical music. सांतपण धोडणू तो आग्रा घराण्याचो विख्यात कलाकार पंडित नगरकर चिदानंद मामा गेल्या निकट संपर्कांत आशिल्लो. तांतल्याक थावनू वसंत मामान संगीताचे शिक्षण घेनी जालतके तांगेल गायनाच प्रभाव वसंत मामाचेरी मस्त जाल्लो. तो तांगेल कुटुंबाचो एक सदस्य सो जावन आशिल्लो आनी ताणे चिदानंद मामाक तांगेल मस्त गायनाच कार्यक्रमांतू हार्मोनियमाचेरी संगत केली. He also had very constructive interactions and debates about Hindustani classical music versus Western music with Chidanand Mam. वसंत मामा गेल्यार शास्त्रीय संगीताचे गुरु म्हळ्यारी चिकरमने मोहन मामू. Mohan Mam was born blind, but was extremely talented and gave Vasant Mam an immensely strong foundation of classical music. Vasant Mam was an excellent student and, as we know, composed a huge variety of melodious songs and bhajans. Let us now listen to a beautiful bhajan by Hosangdi Geeta Pachi. त्यजुनी मोह संसाराचा मार्ग धरू श्री चित्रापुराचा. त्यजुनी मोह संसाराचा मार्ग धरू श्री चित्रापुराचा. भवानी शंकर तोची करील भवानी शंकर तोची करील उद्धार आपुल्या जन्माचा. त्यजुनी मोह संसाराचा मार्ग धरू श्री चित्रापुराचा. काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह पाशते तोडुनिया. काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह पाशते तोडुनिया. ध्यानी मनी असो शिव शंकर ध्यानी मनी असो शिव शंकर माझे तुझे पण सोडुनिया. त्यजुनी मोह संसार
संसाराचा मार्ग धरू श्री चित्रापुराचा. जाऊ श्री चित्रापुरासी जिथे करी जो संचार. जाऊ श्री चित्रापुरासी जिथे करी जो संचार. त्या भवानी शंकरा चरणी, त्या भवानी शंकरा चरणी विद्यमान ती धामे चार. त्यजुनी मोह संसाराचा मार्ग धरू श्री चित्रापुराचा. त्या भवानी शंकराच्या पदी शरण जाऊ होनी निस्वार्थ. त्या भवानी शंकराच्या पदी शरण जाऊ होनी निस्वार्थ. नामतयाचे नित्य स्मरोनी, नामतयाचे नित्य स्मरोनी हो आपण सर्व कृतार्थ. त्यजुनी मोह संसाराचा मार्ग धरू श्री चित्रापुराचा. त्यजुनी मोह संसाराचा मार्ग धरू श्री चित्रापुराचा. भवानी शंकर तोची करील, भवानी शंकर तोची करील उद्धार आपुल्या जन्माचा. त्यजुनी मोह संसाराचा मार्ग धरू श्री चित्रापुराचा. श्री भवानी शंकराय नमः, 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 श्री भवानी शंकराय नमः. Geeta Pachi, you have already transported us to the Sri Chitrapur Mutt with your divine bhajan. Since the early 50s, Vasant Mam had been an ardent devotee of our Sri Chitrapur Mutt and the Guru Parampara. He was actively associated with His Holiness Srimat Anandashram Swamiji and accompanied His Holiness in his camps and yatras. Hot Swamyank व संत मामा गला संगीत ऐकूनच्या इतल थाय प्रीत आशिल खंय की प्रति एक कार्यक्रमांतू आणि पूजे वेळारी ती ताका संगीत म्हणूक लायतालींच खंय. 1959 श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांगेला शिष्य स्वीकारा वेळारी हड्ड स्वाम्यांनी वसंत मामाचेरी मस्त जबाबदारी वपसुयली. ताजनंतर श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी बरयलेली भजन वसंत मामाने अगदी उत्तम रीतीने स्वरबद्ध केली. खेळ तुझे जीव घेणे लागो तुझे पायी, मजदे तवपदी आस इत्यादी भजन आमगेले परम पूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यांगेले मधुर वाणींतू आम्ही सकडांनी ऐकल्यांती नव्या. आता आम्ही नागरकटी रायशेष मामा गेल्या आवाजांतू एक मधुर भजन ऐकूया.
जिथे भक्तीचे गायन चाले, जिथे भक्तीचे गायन चाले, वीणा झंकारती, तेथे दत्तात्रय राहती, तेथे दत्तात्रय राहती. जिथे भक्तीचे गायन चाले, वीणा झंकारती, तेथे दत्तात्रय राहती, तेथे दत्तात्रय राहती. जिथे भक्तीचे हाती कमंडलो, पायी खडावा, हाती कमंडलो, पायी खडावा, भस्म विभूषित मूर्ती पहाया, स्वर्गीचे स्वर भक्तीचे संगीतमय होती, संगीतमय होती. जिथे भक्तीचे गायन चाले, वीणा झंकारती, तेथे दत्तात्रय राहती, तेथे दत्तात्रय राहती. जिथे भक्तीचे परब्रह्म हे अनसूयेचे, पूर्ण करीत ते जे सुमनानी, गुरुचरिताचे पारायण ते श्रद्धेने करीती, तेथे दत्तात्रय राहती, तेथे दत्तात्रय राहती. जिथे भक्तीचे गायन चाले, वीणा झंकारती, तेथे दत्तात्रय राहती, तेथे दत्तात्रय राहती, तेथे दत्तात्रय राहती, तेथे दत्तात्रय राहती, तेथे दत्तात्रय राहती. Vasant Mam had a totally checkered career in the beginning of his life with unimaginable ups and downs. He started a transport business sometime in the early 60s. He had a couple of trucks, out of which he himself drove one of them. Sometimes he had to drive long hours. It was during these hours of driving that he did his riyaz of ragas and a few overtures. He also worked for the Coca-Cola company, delivering bottles from the factory to distributors and retailers in the Coca-Cola truck. Later, he started working in the film industry as a vocalist. He subsequently shifted to orchestral arrangement of songs. He finally emerged
as a full-fledged music director with a strong background of Indian and Western, vocal and instrumental music. In fact, he was so well versed with both the forms of music that his musical scores were a perfect amalgamation of both. In the late 60s, Vasant Mam began actively assisting the renowned music composer Shri Dattaji Davzekar, or Didi, as he was popularly known. Dattaji was so proud of Vasant Mam and impressed by his talent that he gave him several of his music assignments. Vasant Mam also learnt music arrangement, composing of background music, and a lot of technical nuances of cinema from Dattaji. It was Dattaji who encouraged Vasant Mam to script music, that is, to work on a song after writing down its musical score. He mastered this art so well that even till his last days, he could write down the sargam of what a singer was singing and then do the musical arrangement of that song. आणि गम्मत कलकी म्हणारी गुत्त स्वभावानी खंचे पद स्वरबद्ध करताना वसंत मामाक हार्मोनियम किंवा तंबुरा हाच गरजच आसनाशिल्ली. He would say that all surs were his close friends deep inside his heart and soul. So he could call any of them at his will, and they obligingly permutated and combined to take birth as a melodious tune. What a beautiful combination of immense talent, supreme confidence, and utter humility. Absolutely, Amita. Before we proceed to the next singer, we invite our guest of honor, Dr. Aparna Mayekar, to say a few words about the wonderful camaraderie between Shri Dattaji Davzekar and Vasant Mam. As mentioned earlier, Dr. Mayekar herself is a reputed playback singer of the Marathi film industry, in addition to being a qualified medical practitioner. She is also like a Guru Bhagini to Vasant Mam. Dr. Aparna ji, over to you. Namaskar. Can you listen? Yes. Can you listen? Yes, Yeah. yes, yes. मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके. शायद कि मैं वहाँ होती. I could contact you, all of you in person. जब मैं कॉलेज में थी तो एक दिन एक नौजवान आए डीडी से मिलने. मेरे पिताजी को हम सब लोग डीडी कहते हैं. तो डीडी से मिलने एक नौजवान आया. गोरा चिट्टा, गुड लुकिंग, स्पेक्स थे और बहुत हंसमुख था. तो पिताजी ने पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है. बोले कि वसंत हसंगड़ी, पर मैं एच वसंत कहलाना पसंद करता हूँ, ज्यादा मतलब अप्रोप्रिएट. तो मुझे आपके साथ काम करना है, ऐसे डीडी से कहा उन्होंने. तो डीडी ने पूछा कि आप गाने में क्या क्या जानते हो. तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह गा सकता हूँ. तो he sang one number and that was beautiful. फिर डैडी ने उनसे पूछा कि आपको नोटेशन लिखना आता है. तो उन्होंने बोला हाँ आता है मुझे. तो डैडी ने कहा कि दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि हमारे यहाँ समझो एक रिकॉर्डिंग में 30 म्यूजिशियंस काम कर रहे हैं. तो हर एक को उसका पार्ट नोटेशन में लिख के देना पड़ता है, और वो तब तक डीडी करते थे. और जब से वसंत जी ने ज्वाइन किया तो डीडी का ये काम बहुत ही कम हो गया. फिर एक गाना रिकॉर्ड हुआ मराठी में जो बहुत मशहूर है, गंगा आली रे अंगणी, जिसमें वसंत जी ने पहली बार गाया डीडी के लिए, और वो बहुत हिट हो गया गाना. मैं भी थी उस गाने में. उसके बाद भी हम दोनों ने एक ड्यूएट गाया. और वसंत जी का ये था ना कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे. एक बार हमारी ड्रामा की रिकॉर्डिंग चल रही थी. उस वक्त क्या होता था कि जिस हॉल में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो वो साउंड प्रूफ नहीं था. तो रात को 11 बजे हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू करते थे, 5 बजे तक खत्म. तो ऐसे लगा कि माइक्स कम पड़ रहे हैं. तो वसंत जी ने कहा मैं अब भी घर जाके
2 माइक्स लेके आता हूँ. He was to that extent, he was helpful. और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा करते थे. जब वो लखनऊ चले गए तो हम सब लोगों ने उन्हें बहुत मिस किया, स्पेशली डीडी ने, क्योंकि वसंत जी उनका दाहिना हाथ थे. अब डीडी को इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट था और वसंत जी को भी था, तो दोनों की बहुत जमती थी. 1981 में मैं और मेरे हस्बैंड हम लखनऊ गए थे. मेरी ऑल इंडिया रेडियो की एक कॉन्सर्ट थी और 31 दिसंबर को एक हिंदी गानों का शो था वहाँ पे. तो हम उन्हीं के घर में रहे. क्या बताऊं मैं आपको, वसंत जी और कल्पना जी ने जो हमारी खातिर की है, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयां करने के लिए, कि एकदम घर के जैसा ट्रीटमेंट दिया. और उस वक्त वसंत जी ऑल इंडिया रेडियो में थे और मैं ए ग्रेड आर्टिस्ट थी, तो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की वहाँ पे. उनके 4 गाने मैंने गाए और उनके टीवी सेंटर में भी, लखनऊ टीवी सेंटर में मेरे गजलों का एक प्रोग्राम किया. We will never forget him, क्योंकि the way he was with all of us, he was like a family member. और मुझे यकीन है कि वसंत जी आज भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और he will be always there with us through his wonderful music, wonderful compositions and wonderful voice. Thank you so much, Dr. Aparna ji, for this wonderful insight of your cherished association with Vasant Ma'am. आपने हमारे साथ बहुत मन भावन यादें शेयर करी है और जैसे कि आपने कहा, हमारे वसंत मैम रूपवान, गुणवान, कलावान सभी का मिश्रण थे, लेकिन द बेस्ट थिंग इज इन सब का उनको कुछ भी गर्व नहीं था. आता ऐकूया शर्मिला कुंबळे हिगल आवाजांतू वसंत मामान स्वरबद्ध केलेली आणि एक अद्भुत रचना. मुख्य म्हणणारी ही रचना सर्वप्रथम डॉक्टर अपर्णा मयेकर हांगेल आवाजांतू प्रस्तुत झालेली. अपर्णा जी, ये खास आपके लिए. नींद डली नहीं आवे सारी रात, किस विध होए प्रभात, किस विध होए प्रभात, किस विध होए प्रभात. नींद डली नहीं आवे सारी रात, किस विध होए प्रभात, किस विध होए प्रभात, किस विध होए प्रभात. चमक उठी सपने सुध भूले, चंद्र कला ना सुहाग, चंद्र कला ना सुहाग. तड़प तड़प जिया जात हमारो, कब्रे मिले दीनानाथ, कब्रे मिले दीनानाथ, कब्रे मिले दीनानाथ. किस विध होए प्रभात, किस विध होए प्रभात. भई हूँ दीवानी तन सुध भूले, कोई न जाने मारी बात, कोई न जाने मारी बात. मीरा कहे बेटी सोहे जाने, मरण जीवन उन हाथ, मरण जीवन उन हाथ.
विध होए प्रभात किस विध होए प्रभात. Wow, Sharmila, that was a beautiful and soulful rendition. We really enjoyed that. Thank you so much. And thank you, Prithvish, for the beautiful accompaniment on the tabla. Another twist in Vasant Mam's career came in the early 70s. Premier Padmini cars were a status symbol in those times. He had a few contacts in Lucknow who wanted to sell these cars but could not do so because of the lack of availability since the car market was regulated. Vasant Mam's fondness for automobiles was evident from the fact that he had started the truck transportation business. What do you think he did now? He started assembling Premier Padmini cars in Mumbai by purchasing each part separately from the company. After RTO approval, he would drive down to Lucknow to deliver the cars personally. Just imagine, Amita, those were the days when there was no GPS or Google. The conditions on the highway were quite pathetic. There was no security, but he did it, and all alone. And this is how his stint in Lucknow began. But Bhavani, what has Premier Padmini cars got to do with Vasant Mam's stint in Lucknow? Intriguing, no? The car market was deregulated and cars soon became available freely in showrooms. By this time, Vasant Mam had already assembled and delivered about 40 to 50 cars. But this now came to a grinding halt. However, he had established his musical talent in Lucknow, which was considered as the capital of music in northern India. It was here that he started his career as a music composer. We now have Putli Swati Pachi regaining us with another of Vasant Mam's melodious compositions. जय शंकरा केदारेश्वरा डमरु त्रिशूलधारी विधाता शंकर सद्यो जाता. जय शंकरा केदारेश्वरा डमरु त्रिशूलधारी विधाता शंकर सद्यो जाता. हे अमरेश्वर हे योगेश्वर भक्तांचो हितकारी. हे अमरेश्वर हे योगेश्वर भक्तांचो हितकारी. तू दुःख गंजन तू भवभंजन तू दुःख गंजन तू भवभंजन तुझी सृष्टी विधाता शंकर सद्यो जाता. भवानी शंकर सद्यो जाता. जय शंकरा केदारेश्वरा डमरु त्रिशूलधारी विधाता शंकर सद्यो जाता. निर्गुण
जय शंकरा केदारेश्वरा डमरु त्रिशूलधारी विधाता शंकर सद्यो जाता। या अज्ञानी गेली क्षमेची याचना करी स्वीकार। या अज्ञानी गेली क्षमेची याचना करी स्वीकार। चित्रापुर सारस्वतनाथा चित्रापुर सारस्वतनाथा केवल तू आधार प्राता शंकर सद्यो जाता भवानी शंकर सद्यो जाता। जय शंकरा केदारेश्वरा डमरु त्रिशूलधारी विधाता शंकर सद्यो जाता भवानी शंकर सद्यो जाता भवानी शंकर सद्यो जाता। That was really wonderful, Swati and Amit. A perfect example of Vasant Mam's composition. A blend of Indian music with Western instruments. Thank you so much. Vasant Mam तागेल प्रीमियर पद्मिनी असेंबल्ड कार्स घेवन लखनौ येतालो हें आमी तुमकां सांगलें। तशीची ते बिझनेस मागिरी बंद जालें हांवें सांगलें. But Vasant Mam was unfazed. He had already made several contacts in Lucknow. He was also blessed by Saraswati Devi since childhood. He decided to settle down in Lucknow and make music his career. This is how Lucknow became his karma bhumi. है सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। वाह वाह, बहुत खूब अमिता। Vasant Mam's career as a music composer started at a time when music still continued to be in the traditional and old-fashioned style. New trends and technologies were a taboo. Along with music composition, direction, and arrangement, he also imparted training in music. Mind you, for him, teaching music did not mean teaching songs, but teaching what music actually is. His students were from all over India, and never did he charge anyone for learning from him. A true example of a guru, large-hearted, and whose love for Saraswati Devi surpassed the love for Lakshmi Devi. Saraswati की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा, मिट्टी ने माथे का चंदन, बनने का संकल्प ना छोड़ा. Lucknow proved lucky for Vasant Mam in his personal life. 1975 1975 सुंदर आणि सर्व गुण संपन्न कल्पना अगरवाल हित संगाती वसंत मामा गेल्या विवाह झाल्या. 1976 तांगेलो पुत्र रत्नु जन्म आयलो. तागेल नाव आमका सगळ्यांक गोतच नवा.
the one and only Gunjan Vasant Hosangdi. आता आम्ही सौम्या उल्लाळ कंटक पाचीकर व सन्मामाने स्वरबद्ध केलेला एक मधुर भजन प्रस्तुत करूक आमंत्रित करतात. हरिनाम 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 हृदय में बसा जो लिया, हरिनाम हृदय में बसा जो लिया, फिर जग से लगावट करना क्या, अंतर घट में अमृत छलका, अंतर घट में अमृत छलका, फिर घट मदिरा से भरना क्या, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। ये फूल तेरे ये शूल तेरे दोनों ही है अब अनुकूल मेरे, ये फूल तेरे ये शूल तेरे दोनों ही है अब अनुकूल मेरे, जब फूल शूल में भेद नहीं, जब फूल शूल में भेद नहीं, कांटों की डगर से डरना क्या, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हृदय में बसा जो लिया, फिर जग से लगावट करना क्या, हरि नाम हरि नाम। तन धूल बने मन फूल बने, तन जग मेरा में मन तुझ मेरा में, तन धूल बने मन फूल बने, तन जग मेरा में मन तुझ मेरा में, जिस फूल का भाग्य तू है प्रभु, जिस फूल का भाग्य तू है प्रभु, उस फूल का भाग्य संवरना क्या, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हृदय में बसा जो लिया, फिर जग से लगावट करना क्या, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। जीवन में कोई मझधार मिले, जीवन में कोई मझधार मिले, तेरी करुणा की पतवार मिले, जीवन में कोई मझधार मिले, तेरी करुणा की पतवार मिले,
जिस नाव का माझी तू है प्रभु, जिस नाव का माझी तू है प्रभु, उस नाव का भव से तरना क्या। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम हृदय में बसा जो लिया, हरि नाम हृदय में बसा जो लिया, फिर जग से लगावट करना क्या। अंतर घट में अमृत छलका, अंतर घट में अमृत छलका, फिर घट मदिरा से भरना क्या। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। Wow, Soumya, a wonderful composition by Vasant Mam, and you rendered it equally beautifully and melodiously. Thank you. आमगेल वसंत माम म्हळ्यारी हासबुकू सकड़ा संगात मेळ घोळणू गम्मत करतची चेष्ट करतचे आसतालो नव्हे जाल्यारी म्युझिका बाबतींत मात्र he was very short tempered as far as music was concerned. Musicians and singers, on making mistakes, would get such a firing from him that many of them would burst out into tears. But he had a very valid reason for this. He would say, एक तबला वादक बिना तबला मिलाए कभी भी अपनी प्रस्तुति आरंभ नहीं करता। अगर बजते बजते तबला चढ़ या उतर जाए तो उसे हथौड़ी मारकर वह उसे सुर में लाता है। उसी तरह मेरे वादक और गायक कलाकार मेरे वाद्य है। अगर वे बेसुरे या बेताले हो रहे हैं तो मुझे भी उन पर हथौड़ी चलानी होगी ताकि वे सुर ताल में रहें। Of course, this anger would last only as long as the recording was on. Once over, he would again laugh and joke with the same people. His anger was on the mistake and never personal. Learning music from Vasant Mam was also not an easy task. He was a workaholic, perfectionist, strict, and a hard taskmaster. He was a stickler for punctuality. Music aspirants would be given a particular time to come over, and even a minute's delay would mean cancellation of the class on that day. Ani वापस तशी जाल्यारी तो त्या स्टुडंटाक शिकून चेंची राबय तालखय. No wonder tagel compositions itli perfect asati. The proof of this lies in this Nirgun Bhajan composed by our dear Vasant Mam and rendered by the young and talented Siddharth Adur. मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे।
नहीं रहूं मैं झगड़ी बिगड़ी में, नई छुरी गड़ास में। नहीं रहूं मैं झगड़ी बिगड़ी में, नई छुरी गड़ास में। नहीं रहूं मैं खाल रोम में, ना हड्डी ना मांस में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे। ना देवल में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना देवल में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। नहीं रहूं मैं अवध द्वारिका, मेरी भेंट विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे। नहीं रहूं मैं क्रिया कर्म में, ना विराग संन्यास में। नहीं रहूं मैं क्रिया कर्म में, ना विराग संन्यास में। खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे। वाह सिद्धार्थ, क्या बात है। That was a divine composition and you did full justice to it. It was really heartwarming. Thank you so much. Vasant Mam was the founder of the choral group at Akashvani, Lucknow, with over 60 singers and a large orchestra comprising of brass, string, and wind instruments. He was the pioneer to introduce Western instruments and music orchestration in this region, and initially envious so-called rivals used to refer to his music as Bombaya Sangeet. He did novel experiments during the 80s with his choral group. You know, Bhavani, one of the songs in the group was performed without any lyrics. Really? Yes, imagine a full multi-harmony song without any actual lyrics. And he also played around with different ragas and talas in his songs.
आणि एक अद्भुत रचना निर्माण जाताली. आमगेल्या रथोत्सवाच गाणं ह्या 3 रागांत बसकारेल्या वसंत मामाने श्रीवल्ली श्री चित्रापुर श्री मठ के श्री परिसर में श्री सद्गुरु कृपा से श्री चित्रापुर रथोत्सव है. वसंत, कल्याण आणि केदार आणि तालबद्ध करूक तरी वसंत मामाने 4 तालांच प्रयोग केला. रूपक, खेमटा, झपताल आणि घेरवा. श्रीवल्ली श्री चित्रापुर श्री मठ के श्री परिसर में श्री सद्गुरु कृपा से श्री चित्रापुर रथोत्सव है. श्री सद्गुरु कृपा से श्री चित्रापुर रथोत्सव है. श्री सद्गुरु कृपा से श्री चित्रापुर रथोत्सव है. Something absolutely unique नव्हे? A true genius. आणि खंयचे पद स्वरबद्ध करतना तो एक रागाचो आधार घेतालो जाल्यार ताजी गोमटाय वाढोवच खातीर त्या रागांतनातील स्वरांत सुद्दाय अगदी गोमटे रितीने प्रयोग करतालो. कितले टॅलेंटेड आशिल्ले आमगेल वसंत मामू. True. As a singer, he had no parallel. Even at 86 years of age, though his voice had started cracking, his gale ki tayari was better than any of the youngsters. Vasant Mama gelo challo Gunjan hagel shabdantu sangche mhalari. In my 45 years with Papa, as his son, as his student in music, in technical things, his colleague, we were professional partners at one point of time, and he was also my student in a couple of things. So all during this while, I was seeing him composing music, singing, all this without any support or anything. He would just start off. And in all these years, I never heard him or saw him do any kind of riyaz as a singer. Singers do a riyaz of 2 hours, 3 hours, morning riyaz, evening riyaz, खरज का सा लगाना, तार सप्तक का रियाज करना. उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया. हाँ, only when I could hear him humming or trying out something was when he was in the washroom sitting on the commode. Something really very funny, but yes, that is the only time when I could hear him do all that. And yes, one more thing was, he never had that fuss or that choosiness which I include myself in that, as singers, that I have to perform this evening, or I have a recording, I will not take a cold drink, this is ye thanda pani hai, isme mircha hai, isme tel hai. Na, he would have a cold drink, he would have something oily, and if he was asked कि वसंत जी प्लीज आप एक गाना गा दीजिए, तो अगर उनका मन हुआ, he would go and sing, and then that singing was unparalleled. गणपति गणेश की आराधना करे, जग के कल्याण की हम कामना करे. Even at 86 years, his singing was unparalleled. His improvisations, his tayari, that was Guru's gift to him. That was God's gift to him. He was a genius. That's what I want to say. Thank you, Gunjan. That was really insightful and heartwarming. Vasant Mam was truly a blessed soul. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान भी अभी बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, नापने को तो सारा आसमान अभी बाकी है.
These lines capture the true essence of our dear Vasant Mam. Vasant Mam always strived for perfection and excellence in anything and everything he did. Even in his college days, he had received a thunderous applause for not only singing the beautiful song Laga Chunari Mein Daag, originally sung by the famous Manna Dey, but singing it in all 3 speeds. Hence, it is no wonder that he was conferred the coveted Sangeet Natak Academy Award from the UP government in later years. आता आज कार्यक्रमाच्या समर्पण आम्ही होसंगडी गुंजन मामाला एक सुंदर मीरा भजनानं करूया. Set in rag Miyagi Malhar, it gives the ambience of Savan, Jhula, Megh, Varsha, well suited to the current weather in India.
पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनाई, कोयल शब्द सुनाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चितलाई, नंद नंदन बेलबाई, बदराने घेरी माई, नंद नंदन बेलमाई, नंद नंदन बेलमाई, 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 नंद नंदन बेलमाई, बदराने घेरी माई, बदराने घेरी माई, बदराने घेरी माई, परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर, परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु, केशव वामन कृष्ण पांडुरंग, आनंदाश्रम कल्पतरु, परिज्ञानाश्रम सद्गुरु, सद्योजात शंकर सद्गुरु। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Sant Mirabai is an epitome of selfless love and devotion. This Meera Bhajan is an apt offering of our love and affection to our dear Vasant Mam by Gunjan on behalf of all of us. A heartfelt tribute from a son to his father. वसंत मामाक भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केलेल्याक आयच्या कार्यक्रमात भाग घेतिल्ल्या सर्व कलाकारांगेले आम्ही मस्त आभारी असती. वसंत मामाने स्वरबद्ध केलेली पदांचे खजानान थावन तुम्ही आजी सुमार मधुर भजन ऐकली. ही मात्र नाही आणि मस्त अमूल्य रत्न असती. तांतुली आणि थोडी भजन तुमका मुखावेल शनिवारा म्हणल्यारी 14 तारखेक आयकुंच्याक मेळटली. आता आम्ही निलेश्वर महेश मामाक आभार प्रस्तावना करूक विनंती करतात. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Vasant Mam has been a guru to
whoever he has spoken to, whoever he has listened to in many, many ways. And he, as you all know, came into my life when I started Gharana. As they say, Guru leads to a path of light. Guru is that Parabrahma. Tasmai Shri Guruve Namaha means we bow to that Guru. The Guru is Vasant Mam for me. And what a brilliant way to start today's program. Sada Smarana Guru Nam. Vasant Mam is someone who helped me when I cried, scolded me when I thought of breaking the rules, shines with pride whenever a program went very well and was successful. And initially, when we had teething problems, he had faith in me, even though we had some technical issues, as we were all learning about Zoom and how to stream programs from different locations and small places like Malapur and other places. Vasant Mam, you may not need to hold my hand anymore, as you have given us Gunjan, but I will always need you to hold me in your heart. So today's program has been a wonderful, wonderful experience for me. And as I said in the flyer, it is a garland of musicians offering our seva to a great community leader, unassuming. Very important factor in our life is to be very unassuming, always available, always ready to help in whatever way he can. Yes, we adapt ourselves to Western cultures. As Swami Chinmayananda said, in India, when a birthday is celebrated, or was, or is, when we are little kids, we celebrate the birthday, but as we grow, we forget. Swami Chinmayananda used to say, the birthday in India is celebrated by doing arti to the kids, is because we want you to be the light of the future. But we adapt to modern foreign culture where we blow the candle and diminish the light away. So, culture, understanding the importance of what we do is very important. And as you can see, Gharana is very close to everybody. Everybody. Pachis call me and say, oh, ami wait karta sati, ami palaita sati, ami Amgile program. That is how some of the Pachis call me and tell me, Amgil program aaj itla bare sala. So it makes me feel so happy because everybody has a stake in it. Everybody feels that they belong to this program. And that is what I want. And thank you all for your participation. And Gunjan, thank you so much for single-handedly organizing this program, doing everything for our own Vasant Mam. So I thank you all. I invite you all to come back next week for the second part of this celebration. And I request you all to come back because there will be a very important announcement which I'll be making next week. I won't be home. I will be at a campsite. We'll be camping out from middle of nature. I'll be making a very, very big announcement. I'm looking forward to it. I'm waiting to hear
from the universe what my next step should be. But please be there because I need all your support. Jai Shankar. Thank you very much. Jai Shankar.